हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की एंड ली एसेनबर्ग एंड स्टार जैक ब्लैक एंड माइकल सीरिया parody on the book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening weekend and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in फरवरी 2014. डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस, स्क्रीनप्ले हरलोड रेमिस, जैन स्टोपिंकिस, ली एसिम्बर्ज, स्टोरी बाय हरलोड रेमिस, प्रोडक्शन बाय रेमिस, जज एप्टोव, क्लाइटन टॉमरिस, स्टार्टिंग जैक ब्लैक, माइकल सीरिया, ओलिवर प्लेट, डेविड क्रॉस, हैंक एजेरिया, सिनेमेटोग्राफी अलर किबियोल, एडिट बाय क्राइगो हेरिंग, स्टेम विलेज, म्यूजिक बाय थेडो सेपेरियो, प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, द एप्टो कंपनी, ओशियन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट, सोनी पिक्चर। रिलीज डेट 19 जून 2009। नॉर्थ अमेरिका रनिंग टाइम 197 कंट्री, यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड Ramis and distributed by Columbia Pictures. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski and Lee Eisenberg and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figure along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening weekend and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in फरवरी 2014. डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस, स्क्रीनप्ले हरलोड रेमिस, जैन स्टोपिंकिस, ली एसिम्बर्ज, स्टोरी बाय हरलोड रेमिस, प्रोडक्शन बाय रेमिस, जज एप्टोव, क्लाइटन टॉमरिस, स्टार्टिंग जैक ब्लैक, माइकल सीरिया, ओलिवर प्लेट, डेविड क्रॉस, हैंक एजेरिया, सिनेमेटोग्राफी अलर किबियोल, एडिट बाय क्राइगो हेरिंग, स्टेम विलेज, म्यूजिक बाय थेडो सेपेरियो, प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, द एप्टो कंपनी, ओशियन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट, सोनी पिक्चर। रिलीज डेट 19 जून 2009। नॉर्थ अमेरिका रनिंग टाइम 197 कंट्री, यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड Ramis and distributed by Columbia Pictures. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski and Lee Eisenberg and stars Jack Black and Michael Cera. A
parody on the book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Thomas, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 170 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की and Lee Eisenberg and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Thomas, starring Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 170 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड Ramis and distributed by Columbia Picture. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski and Lee Eisenberg and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figure along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis,
स्क्रीन प्ले हरलोड रमेश, जैन स्टोपिंकिश, ली एसिम्बर्ज, स्टोरी बाय हरलोड रमेश, प्रोडक्शन बाय रेमिस जाजेप्टोव, क्लाइटन टॉमरेश, स्टार्टिंग जैक ब्लैक, माइकल सीरिया, ओलिवर प्लेट, डेविड क्रॉस, हैंक एजेरिया, एसिनोटोग्राफी अलर किबियोल, एडिट बाय क्राइगो हेरिंग, स्टेम विलेज, म्यूजिक बाय थर्डो सेपेरियो, प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, द एप्टो कंपनी, ओशियन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट, सोनी पिक्चर, रिलीज डेट 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 197 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की एंड ली एसेनबर्ग and star Jack Black and Michael Cera, a parody on the book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009। It grossed 19.6 मिलियन in its opening weekend and 62.4 मिलियन worldwide against a budget of 60 मिलियन। Upon release, it was panned by critics and audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in फरवरी 2014। डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस, स्क्रीन प्ले हरलोड रेमिस, जैन स्टोपिंकिश, ली एसिम्बर्ज, स्टोरी बाय हरलोड रेमिस, प्रोडक्शन बाय रेमिस जाजेप्टोव, क्लाइटन टॉमरेश, स्टार्टिंग जैक ब्लैक, माइकल सीरिया, ओलिवर प्लेट, डेविड क्रॉस, हैंक एजेरिया, एसिनोटोग्राफी अलर किबियोल, एडिट बाय क्राइगो हेरिंग, स्टेम विलेज, म्यूजिक बाय थर्डो सेपेरियो, प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, द एप्टो कंपनी, ओशियन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट, सोनी पिक्चर। रिलीज डेट 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 197 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड Ramis and distributed by Columbia Pictures. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski and Lee Eisenberg and stars Jack Black and Michael Cera, a parody on the book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figure along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009। It grossed 19.6 मिलियन in its opening weekend and 62.4 मिलियन worldwide against a budget of 60 मिलियन। Upon release, it was panned by critics and audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in फरवरी 2014। डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस, स्क्रीन प्ले हरलोड रेमिस, जैन स्टोपिंकिश, ली एसिम्बर्ज, स्टोरी बाय हरलोड रेमिस, प्रोडक्शन बाय रेमिस जाजेप्टोव, क्लाइटन टॉमरेश, स्टार्टिंग जैक ब्लैक, माइकल सीरिया, ओलिवर प्लेट, डेविड क्रॉस, हैंक एजेरिया, एसिनोटोग्राफी अलर किबियोल, एडिट बाय क्राइगो हेरिंग, स्टेम विलेज, म्यूजिक बाय थर्डो सेपेरियो, प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, द एप्टो कंपनी, ओशियन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट, सोनी पिक्चर। रिलीज डेट 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 197 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं।
ईयर वन is a 2009 American adventure comedy film directed by Harold Ramis and distributed by Columbia Pictures. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski, and Lee Eisenberg, and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Biblical figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 June 2009. It grossed 19.6 million in its opening weekend and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinski, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Thomas, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edited by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Pictures, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 170 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय Harold Ramis and distributed by Columbia Pictures. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski, and Lee Eisenberg, and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Biblical figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 June 2009. It grossed 19.6 million in its opening weekend and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinski, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Thomas, starring Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edited by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Pictures, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 170 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय Harold Ramis and distributed by Columbia Pictures. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski, and Lee Eisenberg, and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Biblical figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 June 2009. It grossed 19.6 million in its opening weekend and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it
was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Tomlish, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 170 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाई हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाई कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाई हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की and Lee Eisenberg and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figures along the way. The film was produced by Judge Apatow production company The Apatow Company and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Tomlish, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 170 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाई हरलोड Ramis and distributed by Columbia Picture. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski and Lee Eisenberg and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figure along the way. The film was produced by Judge Apatow production company The Apatow Company and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Tomlish, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date
19 जून 2009 नॉर्थ अमेरिका रनिंग टाइम 197 कंट्री यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट 60 मिलियन बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन बस। गाइस इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है डाउट जो कि 2008 में आई अमेरिकन ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जॉन पैट्रिक सेलेनी बेस्ड ऑन हिज पुलित्जर प्राइज विनिंग एंड टोनी अवार्ड विनिंग 2004 स्टेज प्ले डाउट a Petrobel produced by Scott Rudin. The film takes place in the Catholic elementary school named for Saint Nicholas, led by Sister Aloysius Marley Strap. Sister James Amy Adam tells Aloysius that Father Flynn might be paying too much attention to the school's only black students, Donald Miller, Joseph Foster, thus leading to analysis investigating flying behavior. The film also features Viola Davis as Donald Miller mother's Mrs. Miller in her breakout roles. So guys, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड बाई रनिंग टाइम 104 मिनट्स, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 20 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 50.9 मिलियन। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की एंड ली एसेनबर्ग एंड स्टार जैक ब्लैक एंड माइकल सीरिया ए parody on the book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Biblical figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 June 2009. It grossed 19.6 million in its opening weekend and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Thomas, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig Herring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका रनिंग टाइम 197 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन बस। गाइस इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, Gene Stupinski and Lee Eisenberg, and star Jack Black and Michael Cera, a parody on the book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Biblical figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on
19 जून 2009 इट क्रॉस 19.6 मिलियन इन इट्स ओपनिंग वीक एंड 62.4 मिलियन वर्ल्ड वाइड अगेंस्ट ए बजट ऑफ 60 मिलियन अपॉन रिलीज इट वाज पैन्ड बाय क्रिटिक्स एंड ऑडियंस रिसीविंग बाय ओनली ए 14% अप्रूवल रेटिंग बेस्ड ऑन 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in फरवरी 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jen Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Tomlish, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Steinbach, music by Theodore Shapiro, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 170 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की एंड ली Eisenberg and star Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Biblical figures along the way. The film was produced by Judge Apatow, production company The Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 मिलियन in its opening week and 62.4 मिलियन वर्ल्ड वाइड अगेंस्ट ए बजट ऑफ 60 मिलियन अपॉन रिलीज इट वाज पैन्ड बाय क्रिटिक्स एंड ऑडियंस रिसीविंग बाय ओनली ए 14% अप्रूवल रेटिंग बेस्ड ऑन 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in फरवरी 2014. डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस, स्क्रीनप्ले हरलोड रेमिस, जैन स्टुपिंकिश, ली एसिम्बर्ज, स्टोरी बाय हरलोड रेमिस, प्रोडक्शन बाय रेमिस, जज एप्टो, क्लाइटन टॉमलिश, स्टार्टिंग जैक ब्लैक, माइकल सेरिया, ओलिवर प्लेट, डेविड क्रॉस, हैंक अजेरिया, सिनेमाटोग्राफी अलर किब्योल, एडिट बाय क्राइग ओहेरिंग, स्टेनब्लेच, म्यूजिक बाय थेडो सेपेरियो, प्रोडक्शन कंपनी Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 170 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड Ramis and distributed by Columbia Picture. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski and Lee Eisenberg, and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Biblical figure along the way. The film was produced by Judge Apatow, production company The Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 मिलियन in its opening week and 62.4 मिलियन वर्ल्ड वाइड अगेंस्ट ए बजट ऑफ 60 मिलियन अपॉन रिलीज इट वाज पैन्ड बाय क्रिटिक्स एंड ऑडियंस रिसीविंग बाय ओनली ए 14% अप्रूवल रेटिंग बेस्ड ऑन 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in फरवरी 2014. डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस, स्क्रीनप्ले हरलोड रेमिस, जैन स्टुपिंकिश, ली एसिम्बर्ज, स्टोरी बाय हरलोड रेमिस, प्रोडक्शन बाय रेमिस, जज एप्टो, क्लाइटन टॉमलिश, स्टार्टिंग जैक ब्लैक, माइकल सेरिया, ओलिवर प्लेट, डेविड क्रॉस, हैंक अजेरिया, सिनेमाटोग्राफी अलर किब्योल, एडिट बाय क्राइग ओहेरिंग, स्टेनब्लेच, म्यूजिक बाय
Theodore Saperio Production Company, Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture. Release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका। रनिंग टाइम 197 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की एंड ली एसेनबर्ग एंड स्टार जैक ब्लैक एंड माइकल सीरिया ए parody on the book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Biblical figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, The Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening weekend and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Thomas, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture. Release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका। रनिंग टाइम 197 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, Gene Stupinski and Lee Eisenberg, and star Jack Black and Michael Cera, a parody on the book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Biblical figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, The Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening weekend and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Thomas, starring Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture. Release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका। रनिंग टाइम 197 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड Ramis and distributed by Columbia Picture. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski and Lee Eisenberg, and star Jack Black and Michael Cera, a parody on the book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of
Sodom after being banished from their tribe. Problem quickly emerged during their journey as they encounter several Bible figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Tomlish, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Steinbach, music by Theodore Shapiro, production company Columbia Pictures, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 197 कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की and Lee Eisenberg and star Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problem quickly emerged during their journey as they encounter several Bible figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Tomlish, starring Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Steinbach, music by Theodore Shapiro, production company Columbia Pictures, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 197 कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की and Lee Eisenberg and star Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problem quickly emerged during their journey as they encounter several Bible figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg,
स्टोरी बाय हरलोड रेमिस, प्रोडक्शन बाय रेमिस, जज एप्टो, क्लाइटन टॉमरिस, स्टार्टिंग जैक ब्लैक, माइकल सीरिया, ओलिवर प्लेट, डेविड क्रॉस, हैंक एजेरिया, एसिनोटोग्राफी अलर किबियोल, एडिट बाय क्राइगो हेरिंग, स्टेम विलेज, म्यूजिक बाय थेडो सेपेरियो, प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, द एप्टो कंपनी, ओशियन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट, सोनी पिक्चर, रिलीज डेट 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 197 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की and Lee Eisenberg and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, द एप्टोव कंपनी एंड वाज रिलीज ऑन 19 जून 2009। इट ग्रोस 19.6 मिलियन इन इट्स ओपनिंग वीक एंड 62.4 मिलियन वर्ल्ड वाइड अगेंस्ट ए बजट ऑफ 60 मिलियन। अपॉन रिलीज इट वाज पैन्ड बाय क्रिटिक्स एंड ऑडियंस रिसीविंग बाय ओनली ए 14% अप्रूवल रेटिंग बेस्ड ऑन 173 वोट्स ऑन रॉटन टोमेटोज। दिस marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in फरवरी 2014। डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस, स्क्रीन प्ले हरलोड रेमिस, जैन स्टोपिंकिस, ली एसिम्बर्ज, स्टोरी बाय हरलोड रेमिस, प्रोडक्शन बाय रेमिस, जज एप्टो, क्लाइटन टॉमरिस, स्टार्टिंग जैक ब्लैक, माइकल सीरिया, ओलिवर प्लेट, डेविड क्रॉस, हैंक एजेरिया, एसिनोटोग्राफी अलर किबियोल, एडिट बाय क्राइगो हेरिंग, स्टेम विलेज, म्यूजिक बाय थेडो सेपेरियो, प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, द एप्टो कंपनी, ओशियन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट, सोनी पिक्चर। रिलीज डेट 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 197 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड Ramis and distributed by Columbia Pictures. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski and Lee Eisenberg and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figure along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, द एप्टोव कंपनी एंड वाज रिलीज ऑन 19 जून 2009। इट ग्रोस 19.6 मिलियन इन इट्स ओपनिंग वीक एंड 62.4 मिलियन वर्ल्ड वाइड अगेंस्ट ए बजट ऑफ 60 मिलियन। अपॉन रिलीज इट वाज पैन्ड बाय क्रिटिक्स एंड ऑडियंस रिसीविंग बाय ओनली ए 14% अप्रूवल रेटिंग बेस्ड ऑन 173 वोट्स ऑन रॉटन टोमेटोज। दिस marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in फरवरी 2014। डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस, स्क्रीन प्ले हरलोड रेमिस, जैन स्टोपिंकिस, ली एसिम्बर्ज, स्टोरी बाय हरलोड रेमिस, प्रोडक्शन बाय रेमिस, जज एप्टो, क्लाइटन टॉमरिस, स्टार्टिंग जैक ब्लैक, माइकल सीरिया, ओलिवर प्लेट, डेविड क्रॉस, हैंक एजेरिया, एसिनोटोग्राफी अलर किबियोल, एडिट बाय क्राइगो हेरिंग, स्टेम विलेज, म्यूजिक बाय थेडो सेपेरियो, प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, द एप्टो कंपनी, ओशियन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट, सोनी पिक्चर। रिलीज डेट 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 197 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड
Ramis and distributed by Columbia Pictures. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski, and Lee Eisenberg, and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinski, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Thomas, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Shapiro, production company Columbia Pictures, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 197 कंट्री, यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय Harold Ramis and distributed by Columbia Pictures. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski, and Lee Eisenberg, and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinski, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Thomas, starring Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Shapiro, production company Columbia Pictures, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 197 कंट्री, यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय Harold Ramis and distributed by Columbia Pictures. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski, and Lee Eisenberg, and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by
ओनली ये 14% अप्रूवल रेटिंग बेस्ड ऑन 173 वोट्स और Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in फरवरी 2014. Directed by Harold Ramis. Screenplay Harold Ramis, Jen Stupinkish, Lee Eisenberg. Story by Harold Ramis. Production by Ramis. Judge Apatow, Clayton Tomlish, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 170 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की एंड ली Eisenberg and star Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Biblical figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, The Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening weekend and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in फरवरी 2014. Directed by Harold Ramis. Screenplay Harold Ramis, Jen Stupinkish, Lee Eisenberg. Story by Harold Ramis. Production by Ramis. Judge Apatow, Clayton Tomlish, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 170 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड Ramis and distributed by Columbia Picture. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski, and Lee Eisenberg, and star Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Biblical figure along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, The Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening weekend and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in फरवरी 2014. Directed by Harold Ramis. Screenplay Harold Ramis, Jen Stupinkish, Lee Eisenberg. Story by Harold Ramis. Production by Ramis. Judge Apatow, Clayton Tomlish, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 170 मिनट, कंट्री
यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की and Lee Eisenberg and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Biblical figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, द एप्टोव कंपनी एंड वाज रिलीज ऑन 19 जून 2009। इट ग्रोस 19.6 मिलियन इन इट्स ओपनिंग वीक एंड 62.4 मिलियन वर्ल्ड वाइड अगेंस्ट ए बजट ऑफ 60 मिलियन। अपॉन रिलीज इट वाज पैन्ड बाय क्रिटिक्स एंड ऑडियंस रिसीविंग बाय ओनली ए 14% अप्रूवल रेटिंग बेस्ड ऑन 173 वोट्स ऑन रॉटन टोमेटोज। दिस marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in फरवरी 2014। डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस, स्क्रीन प्ले हरलोड रेमिस, जैन स्टोपिंकिस, ली एसिम्बर्ज, स्टोरी बाय हरलोड रेमिस, प्रोडक्शन बाय रेमिस, जज एप्टोव, क्लाइटन टॉमरिस, स्टार्टिंग जैक ब्लैक, माइकल सीरिया, ओलिवर प्लेट, डेविड क्रॉस, हैंक एजेरिया। सिनेमेटोग्राफी अलर किबियोल, एडिट बाय क्राइगो हेरिंग, स्टेम विलेज, म्यूजिक बाय थेडो सेपेरियो। प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, द एप्टोव कंपनी, ओशियन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट, सोनी पिक्चर। रिलीज डेट 19 जून 2009। नॉर्थ अमेरिका रनिंग टाइम 170 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड Ramis and distributed by Columbia Pictures. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski and Lee Eisenberg and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Biblical figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, द एप्टोव कंपनी एंड वाज रिलीज ऑन 19 जून 2009। इट ग्रोस 19.6 मिलियन इन इट्स ओपनिंग वीक एंड 62.4 मिलियन वर्ल्ड वाइड अगेंस्ट ए बजट ऑफ 60 मिलियन। अपॉन रिलीज इट वाज पैन्ड बाय क्रिटिक्स एंड ऑडियंस रिसीविंग बाय ओनली ए 14% अप्रूवल रेटिंग बेस्ड ऑन 173 वोट्स ऑन रॉटन टोमेटोज। दिस marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in फरवरी 2014। डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस, स्क्रीन प्ले हरलोड रेमिस, जैन स्टोपिंकिस, ली एसिम्बर्ज, स्टोरी बाय हरलोड रेमिस, प्रोडक्शन बाय रेमिस, जज एप्टोव, क्लाइटन टॉमरिस, स्टार्टिंग जैक ब्लैक, माइकल सीरिया, ओलिवर प्लेट, डेविड क्रॉस, हैंक एजेरिया। सिनेमेटोग्राफी अलर किबियोल, एडिट बाय क्राइगो हेरिंग, स्टेम विलेज, म्यूजिक बाय थेडो सेपेरियो। प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, द एप्टोव कंपनी, ओशियन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट, सोनी पिक्चर। रिलीज डेट 19 जून 2009। नॉर्थ अमेरिका रनिंग टाइम 170 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड Ramis and distributed by Columbia Pictures. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski and Lee Eisenberg and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several
Bible figure along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 June 2009. It grossed 19.6 million in its opening weekend and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Thomas, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Steinbach, music by Theodore Shapiro, production company Columbia Pictures, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 197 कंट्री, यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की and Lee Eisenberg and star Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening weekend and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Thomas, starring Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Steinbach, music by Theodore Shapiro, production company Columbia Pictures, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 197 कंट्री, यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड Ramis and distributed by Columbia Pictures. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski and Lee Eisenberg and star Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figure along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening weekend and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Thomas, starring
Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig Herring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 170 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की and Lee Eisenberg and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, The Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening weekend and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in फरवरी 2014. डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस, स्क्रीन प्ले हरलोड रेमिस, जैन स्टोपिंकिस, ली एसिम्बर्ज, स्टोरी बाय हरलोड रेमिस, प्रोडक्शन बाय रेमिस, जज एप्टो, क्लाइटन टॉमरिस, स्टार्टिंग जैक ब्लैक, माइकल सीरिया, ओलिवर प्लेट, डेविड क्रॉस, हैंक एजेरिया, सिनेमाटोग्राफी अलर किब्योल, एडिट बाय क्राइगो हेरिंग, स्टेम विलेज, म्यूजिक बाय थियोडोर सैपेरियो, प्रोडक्शन कंपनी Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 170 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड Ramis and distributed by Columbia Picture. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski and Lee Eisenberg and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figure along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, The Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening weekend and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in फरवरी 2014. डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस, स्क्रीन प्ले हरलोड रेमिस, जैन स्टोपिंकिस, ली एसिम्बर्ज, स्टोरी बाय हरलोड रेमिस, प्रोडक्शन बाय रेमिस, जज एप्टो, क्लाइटन टॉमरिस, स्टार्टिंग जैक ब्लैक, माइकल सीरिया, ओलिवर प्लेट, डेविड क्रॉस, हैंक एजेरिया, सिनेमाटोग्राफी अलर किब्योल, एडिट बाय क्राइगो हेरिंग, स्टेम विलेज, म्यूजिक बाय थियोडोर सैपेरियो, प्रोडक्शन कंपनी Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 170 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड Ramis and distributed by Columbia Picture. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski and Lee
Eisenberg and star Jack Black and Michael Cera parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Thomas, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 197 कंट्री, यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की and Lee Eisenberg and star Jack Black and Michael Cera parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Thomas, starring Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 197 कंट्री, यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड Ramis and distributed by Columbia Picture. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski and Lee Eisenberg and star Jack Black and Michael Cera parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figure along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold
Ramis before the he died in February 2014. Directed by Harold Ramis. Screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg. Story by Harold Ramis. Production by Ramis. Judge Apatow, Clayton Tomlish, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 197 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की एंड ली एसेनबर्ग and stars Jack Black and Michael Cera, a parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Biblical figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, The Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening weekend and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis. Screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg. Story by Harold Ramis. Production by Ramis. Judge Apatow, Clayton Tomlish, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 197 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड Ramis and distributed by Columbia Picture. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski and Lee Eisenberg, and stars Jack Black and Michael Cera, a parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Biblical figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, The Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening weekend and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis. Screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg. Story by Harold Ramis. Production by Ramis. Judge Apatow, Clayton Tomlish, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 197 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की एंड ली एसेनबर्ग एंड स्टार जैक ब्लैक एंड माइकल सीरिया parody on the book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in फरवरी 2014. डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस, स्क्रीनप्ले हरलोड रेमिस, जैन स्टोपिंकिश, ली एसिम्बर्ज, स्टोरी बाय हरलोड रेमिस, प्रोडक्शन बाय रेमिस, जज एप्टोव, क्लाइटन टॉमरिस, स्टार्टिंग जैक ब्लैक, माइकल सीरिया, ओलिवर प्लेट, डेविड क्रॉस, हैंक एजेरिया, सिनेमेटोग्राफी अलर किबियोल, एडिट बाय क्राइगो हेरिंग, स्टेम विलेज, म्यूजिक बाय थेडो सेपेरियो, प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, द एप्टो कंपनी, ओशियन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट, सोनी पिक्चर। रिलीज डेट 19 जून 2009। नॉर्थ अमेरिका रनिंग टाइम 197 कंट्री, यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड Ramis and distributed by Columbia Pictures. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski and Lee Eisenberg and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figure along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in फरवरी 2014. डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस, स्क्रीनप्ले हरलोड रेमिस, जैन स्टोपिंकिश, ली एसिम्बर्ज, स्टोरी बाय हरलोड रेमिस, प्रोडक्शन बाय रेमिस, जज एप्टोव, क्लाइटन टॉमरिस, स्टार्टिंग जैक ब्लैक, माइकल सीरिया, ओलिवर प्लेट, डेविड क्रॉस, हैंक एजेरिया, सिनेमेटोग्राफी अलर किबियोल, एडिट बाय क्राइगो हेरिंग, स्टेम विलेज, म्यूजिक बाय थेडो सेपेरियो, प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, द एप्टो कंपनी, ओशियन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट, सोनी पिक्चर। रिलीज डेट 19 जून 2009। नॉर्थ अमेरिका रनिंग टाइम 197 कंट्री, यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड Ramis and distributed by Columbia Pictures. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski and Lee Eisenberg and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Bible figure along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in
its opening weekend and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Thomas, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 170 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाई हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाई कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाई हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की and Lee Eisenberg and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Biblical figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, The Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening weekend and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Thomas, starring Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 170 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाई हरलोड Ramis and distributed by Columbia Picture. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski, and Lee Eisenberg, and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Biblical figure along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, The Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening weekend and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Thomas, starring Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company
Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distributes, Sony Picture. Release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका। रनिंग टाइम 170 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन पास। गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की एंड ली एसेनबर्ग एंड स्टार जैक ब्लैक एंड माइकल सीरिया parody on the book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Biblical figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, The Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jen Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Thomas, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Steinbach, music by Theodore Shapiro, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distributes, Sony Picture. Release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका। रनिंग टाइम 170 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन पास। गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर. द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की एंड ली एसेनबर्ग एंड स्टार जैक ब्लैक एंड माइकल सीरिया parody on the book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problems quickly emerge during their journey as they encounter several Biblical figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, The Apatow Company, and was released on 19 जून 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jen Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Thomas, starring Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Steinbach, music by Theodore Shapiro, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distributes, Sony Picture. Release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका। रनिंग टाइम 170 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट 60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन पास। गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर. द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की एंड ली एसेनबर्ग एंड स्टार जैक ब्लैक एंड माइकल सीरिया parody on the book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe.
problem quickly emerged during their journey as they encounter several bybling figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 June 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Tomlish, starting Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 170 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड रेमिस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय कोलंबिया पिक्चर। द फिल्म वाज रिटन बाय हरलोड रेमिस, जीन स्टोपिंस्की and Lee Eisenberg and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problem quickly emerged during their journey as they encounter several bybling figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 June 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow, Clayton Tomlish, starring Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Hank Azaria, cinematography Alar Kibble, edit by Craig O'Haring, Stem Village, music by Theodore Saperio, production company Columbia Picture, The Apatow Company, Ocean Picture Distribute, Sony Picture, release date 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 170 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम ईयर वन मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ईयर वन इज ए 2009 अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट बाय हरलोड Ramis and distributed by Columbia Picture. The film was written by Harold Ramis, Gene Stupinski, and Lee Eisenberg, and stars Jack Black and Michael Cera. A parody on the Book of Genesis. The plot follows two cavemen who travel to the city of Sodom after being banished from their tribe. Problem quickly emerged during their journey as they encounter several bybling figures along the way. The film was produced by Judge Apatow Production Company, the Apatow Company, and was released on 19 June 2009. It grossed 19.6 million in its opening week and 62.4 million worldwide against a budget of 60 million. Upon release, it was panned by critics and the audience, receiving by only a 14% approval rating based on 173 votes on Rotten Tomatoes. This marked the last film to be direct production written by and starring Harold Ramis before he died in February 2014. Directed by Harold Ramis, screenplay Harold Ramis, Jan Stupinkish, Lee Eisenberg, story by Harold Ramis, production by Ramis, Judge Apatow,
क्लाइटन टॉमलिश स्टार्टिंग, जैक ब्लैक, माइकल सीरिया, ओलिवर प्लेट, डेविड क्रॉस, हैंक एजेरिया, सिनेमेटोग्राफी अलर किबियोल, एडिट बाय क्राइगो हेरिंग, स्टेम विलेज, म्यूजिक बाय थर्डो सेपेरियो, प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर, द एब्डो कंपनी, ओशियन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट, सोनी पिक्चर, रिलीज डेट 19 जून 2009, नॉर्थ अमेरिका, रनिंग टाइम 170 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 62.4 मिलियन। बस गाइस, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।